welcome to my YouTube channel Pharmacy Lecture Notes. Today we discuss about the topic urinary system. So before the starting the topic, please subscribe, share my channel, and the notes related to this topic urinary system. I will provide it in my Telegram account. The link will be given in the description. So download it from Telegram. Here we start the topic urinary system. What is urinary system? Introduction. The urinary system also known as the renal system. हम urinary system को renal system भी कहते हैं. The urinary system refer to the structure that produce and conduct urine to the point of excretion. वो सिस्टम जो कि हमारा यूराइन प्रोड्यूस करता है जहाँ से हम टू द पॉइंट ऑफ excretion. Urinary system organ. There are two kidneys, two urethras, one urinary bladder and one urethra. This is a diagram of urinary system. It is started for inferior vena cava, adrenal gland, kidney, aorta, urethra, bladder, urethra. Kidney. The human body normally has two paired kidney, one on the left side and one on the right side. हमारे ह्यूमन बॉडी में, हमारे शरीर में एक पेयर होता है किडनीज का. दो किडनीज होती है जो कि एक लेफ्ट साइड ऑन द बॉडी एंड वन इज अदर राइट साइड इन द बॉडी. द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन. जो उसकी फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की वो नेफ्रॉन होती है. यूराइन इज फॉर्म बाय नेफ्रॉन्स. जो हमारा यूराइन फॉर्म होता है वो नेफ्रॉन के हेल्प से होता है. लोकेशन एंड एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ किडनी. दिस इज लोकेशन एंड एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ किडनी. देयर इज अ किडनी. दीज आर टू किडनीज, यूरेथ्रा, ब्लेडर और यूरेथर एंड यूरेथ्रा. This is a bladder. This is a diagram of location of external kidney. Protected by three connective tissues layer. First is renal facies, second is adipose capsule, third is renal capsule. जो हमारा ये प्रोटेक्ट की जाती है तीन लेयर से, जो कि हमारी पहली है रीनल फेसिस अटैच टू द एब्डोमिनल वॉल, जो कि हमारे एब्डोमिनल वॉल से जुड़ी हुई होती है. सेकंड वन इज एडिपोज कैप्सूल, जो कि हमारा फैट कोजिंग किडनी है. थर्ड वन इज रेनल कैप्सूल, फाइब्रस सैक, प्रोटेक्ट फ्रॉम ट्रामा एंड इन्फेक्शन. दिस इज अ फुल डायग्राम ऑफ किडनी. You can see that part of kidney: cortex, medulla, renal capsule, minor calyx, major calyx, renal column, renal pyramid, urethra, renal pelvis or renal papilla. This is a whole diagram. Many times this diagram is asked in a question in a board exams. Anatomy of the kidney. Superficial outer cortex and inner medulla. The medulla consists of 6 to 18 renal pyramid.
जो हमारा मेडुला होता है वो 6 से 18 रीनल पिरामिड्स कंसिस्ट करता है। द कोर्टेक्स इज कंपोज्ड ऑफ रफली 1.25 मिलियन नेफ्रॉन। जो हमारा कोर्टेक्स है वो कंपोज करता है 1.25 रफली मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। एनाटॉमी किडनी, रीनल पेरेन्सीमा, extension of cortex, divided medulla into 6 to 10 renal pyramid as well I tell you. Pyramid plus overlaying cortex is equal to lobe। जो हमारा पिरामिड और ओवरलेइंग कॉर्टेक्स होता है उन दोनों को मिलाकर हमारा लोब बनता है। पॉइंट ऑफ पिरामिड इज कॉल्ड पेपिला। पेपिला नेस्टेड इन कप 2 to 3 minor calyces major is a major silex। 2 to 3 major silex is a renal pelvis. Renal pelvis is a urethra. Nephrons. Nephrons is a functional unit of kidney which contain 1.2 million per kidney। एक किडनी में हमारे लगभग 1.25 मिलियन के आसपास होते हैं। There is a three main part of nephron: blood vessel, renal corpuscle, and renal tubule. Blood vessel serving kidney: glomerulus, fenestrate capillaries, filtration in glomerular intake urine production, filtrate lake cell and protein, drained by efferent artery. It is a full process with the help of diagram of urinary extraction. As you can see that extraction, filtration, reabsorption, secretion. This is a four main parts. Corpuscle composed of glomerulus and the Bowman capsule. The renal corpuscle is a beginning of the nephron. It is the nephron initial filtering component. Glomerulus. The glomerulus is a capillary tube that receives its blood supply from an efferent artery of the renal circulation. The glomerular blood pressure provides the driving force for water and solute to be filtered out of the body and into the space between Bowman capsule. Bowman capsule. The Bowman capsule, also called the glomerular capsule, surrounded the glomerulus. It is composed of visceral inner layer formed by a specialized cell called podocytes. Partial outer layer composed of simple squamous epithelia. Fluid from blood in the glomerulus are filtered through the visceral layer of podocyte, resulting in the glomerular filtrate.